जय श्री कृष्ण बाल मित्रों। आज आप सप्टेम्बर महीनानी चोपड़ी में पेज नंबर 54 पर सामान्य ज्ञान में शू जोईशू तो कि दूध और तेमांथी बनती वस्तुओं विषे आज आप शीखीशू। तो पहला तो आपने दूध कोण कोण आपे छे तो कि दूध आपने गाय भैंस और बकरी आपने दूध आपे छे। बराबर। आपने कोण कोण दूध आपे छे, क्या क्या प्राणीओ तो कि गाय भैंस और बकरी आपने दूध आपे छे। हवे आपणे आ दूध आपणे दररोज तमे सवारे दूध पीवो छो ने, तो आपणे दररोज सवारमां दूध पीवुं जोईए। दूधथी आपणामां शक्ति आवे छे। तो हवे दूधमांथी आपणे शुं शुं बनावी शकीए, चालो जोईए। तो दूधमांथी आपणे कई कई वस्तु बनावीए तो कि दूधमांथी दही बने, छाश बने, घी बने, चीज बने, माखण बने, आइसक्रीम, चॉकलेट और पनीर। तो आ बधी वस्तुओं शेमांथी बने छे तो कि दूधमांथी। शेमांथी बने? दूधमांथी। तो पेलुं शुं छे? घी। पेलुं शुं छे? दही। तो दही तमे जमवामां ल्यो छो ने दही, तो दही शेमांथी बने तो कि दूधमांथी। पछी तमे जमती वखते आरे छाश पीवो छो ने, छाश शेमांथी बने तो कि दूधमांथी। शेमांथी बने? दूधमांथी। पछी शुं छे? घी। तो घी तमे लगावो छो ने रोटलीमां, तो ई शेमांथी बने तो कि दहीमांथी ज दूधमांथी ज बने छे। पछी शुं छे? चीज। तो चीज तमे आपणे बारोबार जमवा जाईए अथवा घरे मम्मी बनावे मस्त स्वादिष्ट वस्तु, तो एमां मम्मी चीजनो उपयोग करे छे ने, पीઝા ने एवुं तमे खाओ छो, बर्गर ने, तो एमां मम्मी चीजनो उपयोग करे छे। तो चीज शेमांथी बने तो कि दूधमांथी। पछी शुं छे? माखण। माखण शेमांथी बने तो कि माखण पण दूधमांथी बने छे। दूधमांथी जे मलाई निकळे छे ए मलाई ने आपणे मलाई आपणे એટલે શેમાંથી બને? માખણ શેમાંથી બને એટલે કે દૂધમાંથી। પછી શું છે? આઈસ્ક્રીમ। તો આઈસ્ક્રીમ પણ શેમાંથી બને તો કે દૂધમાંથી। ચોકલેટ પણ શેમાંથી બને? દૂધમાંથી જ બને છે। અને પનીર પણ દૂધમાંથી બને છે। તો આ બધી વસ્તુઓ શેમાંથી બને છે? દૂધમાંથી। હવે નીચે જુઓ કે દૂધમાંથી કઈ કઈ મીઠાઈઓ બને છે તો કે दूधमांथी गुलाबजांबू, रबड़ी, पेंडा और श्रीखंड। दूधमांथी कई कई वस्तुओं बने छे तो कि गुलाबजांबू, रबड़ी, पेंडा और श्रीखंड। आ बधी वानगीओ एटले के मीठाई शेमांथी बने छे तो कि दूधमांथी। शेमांथी बने? दूधमांथी। तो तमने खबर पड़ी ने कि दूधमांथी कई कई वस्तुओं बने छे। चलो बाजू में पेज नंबर 55 पर जोईए तो शू है? अहींया 55 पर तो कि दूध आपता प्राणीओ पर खरू करो। अहींया 3 प्राणीओना चित्र आपेला छे। तो एमांथी गायनुं चित्र छे। तो गाय आपणे दूध आपे छे। गाय दूध आपे ने, तो गायना चित्रनी पासे खरू करो। पछी शेनुं चित्र छे? हाथीनुं। तो हाथी आपणे दूध आपे छे तो कि हाथी आपणे दूध आपे नहीं। तो हाथीना चित्र पासे कई करवानुं नथी। पछी शेनुं चित्र छे? बकरी। शेनुं छे? बकरी। तो कि बकरी आपणे दूध आपे छे, तो शुं लखवानुं कि हाँ बकरी आपणे दूध आपे छे। तो बकरीना चित्र पासे शुं करवानुं? खरू करवानुं। पछी शुं छे नीचे कि दूधमांथी बनती वस्तुओं पर खरू करो। दूधमांथी बनती वस्तु पर खरू करो। तो पेलुं चित्र शेनुं छे? रोटली। शेनुं छे? रोटली। तो रोटली दूधमांथी बने नहीं। रोटली शेमांथी बने तो कि रोटली घऊमांथी बने। शेमांथी बने? घऊमांथी। तो रोटलीना चित्र पासे कई करवानुं नथी। पछी शुं छे तो कि पेंडानुं चित्र। तो पेंडा दूधमांथी बने छे। तो शुं आवशे त्यां? पेंडाना चित्र पासे खरू। तो पेंडा शेमांथी बनशे? दूधमांथी। पछी शेनुं चित्र छे? चीज। तो चीज शेमांथी बने? दूधमांथी। तो आपणे चीजना चित्र पासे शुं करवानुं? खरू करवानुं। पछी नीचे शुं छे कि दूधमांथी न बनती वस्तु पर ચોકડી करो। हवे दूधमांथी पेलुं शुं छे? बिस्किट। तो बिस्किट दूधमांथी बने नहीं।
તો આપણે અહીંયા શેનું કરવાનું છે? ચોકડી. પછી શું છે? આઈસ્ક્રીમ. તો આઈસ્ક્રીમ શેમાંથી બને છે? દૂધમાંથી. તો અહીંયા કંઈ કરવાનું નથી. પછી શું છે? દહીં. શું છે? દહીં. તો દહીં છે એ દૂધમાંથી બને ને, તો દહીંના ચિત્ર પાસે પણ કંઈ કરવાનું નથી. પછી નીચે છે પ્રશ્નો. તો આપણે એ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. તો શું અહીંયા લખ્યું છે કે શું આપણે દરરોજ દૂધ પીવું જોઈએ? તો આપણે શું લખવાનું કે હા, આપણે દરરોજ દૂધ પીવું જોઈએ. શું કામ પીવું જોઈએ? તો કે આપણામાં શક્તિ આવે. શું આવે? સ્ટ્રોંગ બનીએ આપણે. શું થાય? સ્ટ્રોંગ બનીએ. એના માટે આપણે દરરોજ દૂધ પીવું જોઈએ. પછી શું લખ્યું કે કયા કયા પ્રાણીઓ આપણને દૂધ આપે છે? તો આપણે કીધું ને હમણાં કે ગાય, ભેંસ અને બકરી દૂધ આપે છે. પછી શું લખ્યું છે કે દૂધમાંથી શું વસ્તુ બને છે? દૂધમાંથી શું બને છે? તો કે દૂધમાંથી દહીં, છાશ, માખણ, ઘી, પનીર અને મીઠાઈઓ બને છે. પછી નીચે શું લખ્યું? દૂધમાંથી કઈ કઈ મીઠાઈઓ બને છે? તો આપણે નીચે શું લખ્યું છે જવાબમાં કે દૂધમાંથી રબડી, શ્રીખંડ, પેંડા વગેરે જેવી વસ્તુઓ બને છે. તો આ તમારે પેજ નંબર 54 અને 55 તમારે ઘરે જાતે કરવાનું છે. આવી રીતના પહેલાં તમે વાંચજો અને સમજજો અને પછી તમારે અહીંયા ટપકા ખરું કરવાનું છે. જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો.